हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर 27 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस का एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स 1 एंड 2 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो क्लास 11 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर +2 लेवल इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। Problem number 1 is a vessel containing 1 mole of a monoatomic ideal gas, molecular weight equals to 20 gram per mole, is moving on a fluid at a speed of 50 meter per second. The vessel is stopped suddenly, assuming that the mechanical energy lost has gone into the internal energy of the gas. Find the rise in its temperature. एक वेसल है जिसमें 1 मोल मोनोएटमिक गैस, आइडियल गैस, जिसका मोलिकुलर वेट 20 ग्राम पर मोल है, भरी हुई है। एंड वह वेसल किसी फ्लूइड पर, किसी सरफेस पर 50 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल स्पीड से मोशन करता है, बट वह वेसल सडनली, अचानक रुक जाता है। यह मानते हुए कि मैकेनिकल एनर्जी वेसल का लॉस्ट होता है, वह गैस के इंटरनल एनर्जी के रूप में राइज करता है, इंक्रीज करता है। दैट इज लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेसल। हियर मैकेनिकल एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ऑफ द वेसल, although mechanical energy is the sum of potential energy and kinetic energy, but in this case, in case of motion, mechanical energy is only kinetic energy of the vessel, in form of kinetic energy of the vessel. तो इस प्रोसेस में गैस के टेम्परेचर में इंक्रीज को, राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस को कैलकुलेट करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। इट इज गिवन लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि यहां पर वेसल मोशन में है, तो वैसे तो मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, लेकिन क्योंकि वेसल मोशन के केस में है, इसलिए वेसल की मैकेनिकल एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी ही होगी। सो लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द वेसल, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, इज इक्वल्स टू गेन इन और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मोनोएटमिक आइडियल गैस। क्योंकि सिलेंडर के अंदर, वेसल के अंदर मोनोएटमिक गैस भरी हुई है, जिसका कि मोलिकुलर वेट 50 ग्राम पर मोल है। गेन, सो लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेसल इज इक्वल टू गेन इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस, monoatomic ideal gas kept in the vessel. Loss in mechanical energy or kinetic energy is half mu square minus, that is initial kinetic energy, minus final kinetic energy. But final kinetic energy of the vessel is 0 because vessel is stopped. क्योंकि vessel अंत में अचानक रुक जाता है, इसलिए उसका फाइनल स्पीड vessel का 0 होगा, लेकिन इनिशियल स्पीड u is given 50 मीटर पर सेकेंड। So loss in mechanical energy of the vessel or loss in kinetic energy of the vessel is half mu square minus 0. So it is half mu square. Half mu square equals to gain in internal energy of the ideal gas is gain in internal energy of the ideal gas, that is delta U, is n is equal to n multiplied by CV multiplied by delta T. This is
delta U, because we know the formula of change in internal energy. Delta U equals to mCV multiplied by delta T. Here mass of the gas is equal to molecular weight of the gas, because molecular weight is 20 ग्राम पर मोल. 1 मोल गैस का मोलिकुलर वेट क्या है? 1 मोल गैस का जो वेट है, मास है, वह 20 ग्राम है. इसलिए मास ऑफ द गैस इज 20 ग्राम पर मोल. दैट इज 1 मोल गैस का मास 20 ग्राम है. तो यहाँ पर जो मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर वेट है गैस का, जो कि कैपिटल एम, वह मास ऑफ द गैस स्मॉल एम के इक्वल होगा. दैट इज 20 ग्राम. 1 मोल ही गैस है एंड मोलिकुलर वेट भी 20 ग्राम पर मोल है. सो इट इज हाफ. देयरफॉर eliminating delta T, therefore increase in temperature delta T or rise in temperature is equal to half mu square divided by n multiplied by small n is the number of moles in the vessel. Number of moles of the monoatomic gas kept in the vessel. vessel के अंदर रखी गई मोनोएटमिक गैस का नंबर ऑफ मोल्स है स्मॉल. So delta T, that is rise in temperature, equals to 1 by 2 mu square upon n into Cv, equals to 1 by 2. Mass of the gas is 20 gram, that is 20 multiplied by 10 to the power minus 3 in kg. 20 ग्राम को kg में कन्वर्ट कर दिया गया. Multiplied by u square, u is 50. Initial velocity of the vessel is 50 meter per second, so it is 50 square upon number of moles of the gas is 1 mole, and it is a monoatomic gas. For a monoatomic gas, Cv equals to 1 by 2 multiplied by 3. 1 by 2 multiplied by 3 R, where degrees of freedom for a monoatomic gas, a small f equals to 3. So Cv for a monoatomic gas is 3 by 2. 1 by 2 into 3 into R. 1 by 2 f, a small f into R, that is 1 by 2 multiplied by 3 into R, that is 3 by 2 R. So Cv का वैल्यू मोनोएटमिक गैस के लिए 3 by 2 into V, sorry, 3 by 2 multiplied by 3 by 2 into R. ये Cv का वैल्यू हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो इट इज अ स्मॉल Cv और इट कैन बी रिटन एज Sv, सिंबल फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, S दे करके सफिक्स में भी, और स्मॉल c सफिक्स में भी, दोनों सिंबल का यूज किया जा सकता है. यहाँ स्मॉल c सफिक्स में भी है, दैट इज, और Sv सिंबल्स का भी यूज किया जा सकता था. तो Cv इक्वल टू मोनोएटमिक गैस के लिए Cv का जो वैल्यू है वह कितना है? 1 by 2 into F, that is 3. Degree of freedom for monoatomic gas is 3. 1 by 2 into 3 into R, that is 3 by 2 into R, capital R. Now it is 2 से 2 कैंसिल हो गया. Now it is 20 multiplied by 10 to the power minus 3 multiplied by 50 square is 2500 upon 3. Value of capital R is 8.31 joule per mole per Kelvin. Now it is 10 to power minus 3 and 10 to power plus 3. 2 का 20 का 0 and 2500 का 2 0 मिल करके दोनों पावर ऐड हो करके 10 to power plus 3 हो जाएगा, और वो 10 to power minus 3 से कैंसिल हो जाएगा. इस प्रकार 25 into 2. Now we will left with 25 into 2 in the numerator, and in the denominator it is 3 into 8.31. So it is 25 into 2, that is 50, multiplied by 3 into 8.31, that is 24.9 after 24.93. So it is 24.93, and it is
50 मल्टीप्लाइड बाई 24.93 डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 into 100 that is 5000. After dividing 5000 by 2493 nearly 2500, it is 2. So 2 Kelvin, 2K, that is delta T, rise in temperature of the monoatomic ideal gas kept inside the vessel is 2 Kelvin. Rise or increase in temperature of the gas, that is monoatomic ideal gas. Delta T equals to 2K, rise in temperature or increase in temperature of the monoatomic ideal gas kept inside the vessel. Monoatomic gas vessel के अंदर रखे गए monoatomic gas का temperature में increase delta T 2 Kelvin. This is the answer of this problem. Problem 2 is 5 gram of a gas is contained in a rigid container and is heated from temperature 15 degrees C to 25 degrees C. A specific heat capacity of the gas at constant volume is 0.172 calorie per gram per degree centigrade, and the mechanical equivalent of heat is 4.2 joule per calorie, that is capital J equals to 4.2 joule per calorie. Calculate the change in the internal energy of the gas. 5 ग्राम मास का एक गैस को एक रिजिड कंटेनर और रिजिड वेसल, रिजिड कंटेनर मीन्स वैसा कंटेनर, वैसा वेसल जिसके वाल्स एंड पिस्टन फिक्स्ड होते हैं, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस और इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस in that case, in that vessel, in a rigid container is 0. And गैस को हीट किया जाता है, रिजिड कंटेनर के अंदर 5 ग्राम की गैस रखी गई है जिसे गर्म किया जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम पर, दैट इज स्मॉल सी भी और एस भी is equal to 0.172 calorie per gram per degree centigrade, and mechanical equivalent of heat कैपिटल J का वैल्यू दिया है 4.2 जूल पर कैलोरी. तो गैस के इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज कैलकुलेट करना है, दैट इज डेल्टा यू. वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा यू. सो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, heat supplied to the gas delta Q is equal to delta U plus delta W, that is P multiplied by delta V. But change in volume of the gas is 0 because gas is kept in a rigid container. क्योंकि गैस को रिजिड कंटेनर में रखा गया है, तो गैस के वॉल्यूम में इंक्रीज 0 होगा. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो सेकेंड पार्ट है, delta W work done at constant pressure P into delta V. Since delta V is equal to 0, therefore delta Q equals to delta U, that is heat supplied to the gas is directly used to increase the internal energy of the gas. बाहर से हीट सप्लाई जो गैस को किया जाएगा वह गैस के इंटरनल एनर्जी को, क्योंकि हीट सप्लाई किया, गैस को हीट किया जा रहा है तो हीट सप्लाई हो रहा है, तो वह केवल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा. जबकि रिजिड कंटेनर के अंदर गैस है तो गैस का जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, गैस के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा V इक्वल टू 0. सो सेकेंड टर्म P इंटू डेल्टा V, दैट इज डेल्टा W वर्क डन बाय द गैस इज 0. सो सिंस increase in volume of the gas is 0, therefore delta W is equal to 0. Therefore delta Q is equal to heat supplied to the gas is equal to increase in internal energy of the gas, or delta Q equals to delta U, that is delta, we can write delta Q is equal to delta U. So delta U equals to mass of the gas multiplied by SV, a specific heat capacity of the gas at constant volume, multiplied by delta theta or delta small t, that is rise in temperature. So say it is delta small t, rise in temperature. Increase in temperature is 25 degrees C, T2 minus T1, or theta 2 minus T1, theta 1, that is 25 minus 10, and that is 25 minus 15, that is 10. Now mass of the gas is 5 gram, so it is 5 in
CGS unit. A specific heat capacity is given in the CGS unit. So we have taken mass. Mass of the gas is also given in CGS unit. So mass of the gas is 5 gram multiplied by a specific heat capacity of the gas at constant volume. SV equals to SV or a small cv equals to 0.172 calorie per gram per degree centigrade. That is formula for internal energy. Delta Q is equal to, since delta Q, formula for delta Q is we know that delta Q is equal to mass into a specific heat capacity into rise in temperature, and here delta U, increase in internal energy of the gas is equal to the heat supply, delta Q. So delta U is equal to delta Q barabar is equal to mass multiplied by a specific heat capacity of the gas at constant volume, SV multiplied by increase in or rise in temperature delta small t, m into SV into delta T. Mass of the gas is 5 gram. The specific heat capacity of the gas at constant volume is 0.172 multiplied by delta T is increase in temperature, that is T2 minus T1, that is 25 minus 15, that is 10, 25 degree C minus 15 degree C, that is 10 degree C. क्योंकि गैस का टेम्परेचर गैस को हीट करने से 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करता है. दैट इज नाउ इट इज 5 into 0.1722 multiplied by 25 minus 15 is 10 and is equal to 5 multiplied by 0.172 multiplied by 10 is 10 is 1.72. This is in calorie. This is in calorie. That is increase in internal energy of the gas is equal to heat supplied to the gas. In this case, using first law of thermodynamics, since change in increase in volume of the gas is 0. So 5, it is 5 into multiplied by 1.72. अब 5 में 1.72 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका वैल्यू होगा 8.60, that is calorie, that is 8.6 calorie. अब जूल में आंसर के लिए मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट भी दिया है, जे का वैल्यू भी दिया है 4.2 जूल पर कैलोरी. तो जूल में आंसर लाने के लिए यहाँ तो आंसर हो गया डेल्टा यू इक्वल्स टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस 8.6 कैलोरी. जूल में लाने के लिए जे का वैल्यू प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो 8.6 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल जे इज 4.2 जूल पर कैलोरी. सो 1 जूल का वैल्यू 4.2 जूल पर कैलोरी. So 8.6 calorie is 8.6 multiplied by J. So it is 8.6 multiplied by 4.2. 4.2 and now it is in joule. तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 J का वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना होगा. So it is 8.6 multiplied by 4.2 joule, that is 36.12 joule. After round off करने पर we can write it as 36 joule. After multiplying 8.6 multiply and 4.2 we get 36.12 joule, and after rounding off we can write it as only 36 joule. So it is delta U, that is increase in internal or change in internal energy. Change means increase. Change means increase in internal energy of the gas after heating it. गैस को गर्म करने पर उसके इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज. डेल्टा यू इज इक्वल टू 8.6 कैलोरी इज इक्वल टू 8.6 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 जूल. सो इट इज 36 joule answer. Change or increase in internal energy of the gas. 36 delta U is equal to 36 joule. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel Physics Quantum Classes.